क्या है कल के मैच के बारे में। सो विल स्टार्ट विथ नारायण सर। आई वुड लाइक टू जस्ट बिफोर नारायण स्टार्ट, अगर किसी को भी कोई शक था कि चोकर्स की दुनिया में रॉयल चोकर्स कौन है, तो कल के मैच के बाद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि चोकर्स तो बहुत है, रॉयल चोकर्स एक ही है। दैट इज द रॉयल चोकर्स ऑफ राजस्थान। क्योंकि आप अगर एक बिल्कुल सिंपल हिसाब है सर। तीन आप 10, आज 12 में से 3 मैच जीते हैं, 9 हारे हैं। 9 जो हारे हैं उसमें से 3 ऐसे हारे हैं 11 रन से, 1 रन हाँ। से और 2 रन से। यानी कि आप 12-6 हो सकते थे, लेकिन आप 12-3 पे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एक पदवी है, वो पदवी है रॉयल चोकोज ऑफ राजस्थान। ओवर टू यू नारायण। बट कल तो ऐसा लगा मेरे को कि जिनके जिनके ब्लड प्रेशर का इश्यू होता और वो अगर देखते उसको, तो उनका प्रेशर ऊपर नीचे भयंकर हो गया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। So what a match, what a match, What a what a match, match, what like a match, what a what a match, match. So it was, if you see back to back in 2 days, we saw last ball victory, Yeah, in yeah. RCB versus CSK, we saw 2 run victory, and in KKR and RR, we saw one run victory basically, So this is what cricket, excites about, and why लोग देखते क्यों हैं क्रिकेट में। 80 करोड़ लोग क्रिकेट के अंदर क्यों इंडियंस क्यों जूझ रहे हैं बेसिकली। हम्म। दे आर एंजॉयिंग दिस। सो दिस इज वन थिंग। केकेआर ने टॉस जीता एंड बैट इलेक्ट दे इलेक्टेड टू बैट। वेरी रेयरली हैपनिंग इन दिस आईपीएल कि आदमी टॉस जीत के बैटिंग ले रहा है एक्चुअली, सो जैसे आपने कल कहा था अपने प्रीव्यू में कि all the R's which are there, the Rahane, the Raghuvanshi, the Russell, and the Rinkus, they should play. और कल यही हुआ, सबके सब आर खेले एक्चुअली। Even Rahmanullah Gurbaz also played. So he played 35, good knock. Rahane, the captain, 30, a good knock. Raghuvanshi, the young man, again doing quite well, 44. And Russell finally came in the party. He scored 57 of 25 balls, Brilliant, 4 चौके brilliant, और 6 छक्के, brilliant. है ना। सो अगर 57 में से 52 रन तो उन्होंने खाली चौके और छक्के में ही लगाए हैं। खाली रिंकू ऑल्सो इन 6 balls ही स्कोर 19 रन बेसिकली, अगर ज्यादा बॉल मिलते तो कल ही कुड हैव स्कोर्ड समथिंग मोर देन व्हाट ही स्कोर्ड एक्चुअली। ओनली नारायण कुड नॉट गेट इनटू द पार्टी यस्टरडे। अगर इसको देखा जाए तो बॉलर्स अगर देखते हैं आरआर के, तो एक्सेप्ट युद्धवीर सिंह एंड रियान हिमसेल्फ, कोई ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। Theksana was hit for 41. Madhwal was hit for 50 runs in 3 overs actually. Akash Madhwal, he is a good bowler, young bowler, he should try to work out. तो ये ऐसा हुआ कि जब केकेआर बैटिंग करने आया तो बॉलर्स में दम नहीं है एक्चुअली। तो आरआर वैसे भी एलिमिनेटेड है, बट दे कुड डू दिस शॉकर टू केकेआर एंड पुल इट डाउन बेसिकली। जब आरआर की चेजिंग की बारी आई, अगेन मिस्टर वैभव, यंग मैन, सेकेंड बॉल एक चौका मार के आउट हो गए। जायसवाल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, इज अ गुड बैट फॉर इंडिया, बट इट वाज द कैप्टन रियान पराग दिस टाइम हु हिट अ सुपर्ब 95, and I'm sorry that he should have scored that century yesterday, somehow. He had 6 fours and 8 used sixes, and all six, all around the park he hit sixes, basically. एंड उसके स्ट्राइक रेट भी 211 थी। ये ऑलमोस्ट टुक द आरआर इनटू द विक्ट्री डेन एक्चुअली। जब ये आउट हुए 173, जब 173 पे आउट हुए 17.4, कम से कम 16 डिलीवरी थी और 34 रन थे। विकेट्स गिर गए थे, लेकिन मेरे को लगा कि शुभम दुबे और जिस तरह से आर्चर खेल रहे हैं लास्ट 2-3 मैच के अंदर, इट वाज नॉट समथिंग विच वाज नॉट टेकिंग ओवर बेसिकली। जीत सकते थे। अल्टीमेटली आरआर गिव अ फ्राइट टू केकेआर। एक्चुअली वो हार जाते कल तो गिर जाते अल्टीमेटली, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। रसेल साहब को प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। मेरे ख्याल से अगर मैं होता आई वुड हैव गिवन टू रियान पराग बेसिकली। ऐसा नहीं है कि खाली विनिंग टीम को जीतना चाहिए, प्लेयर ऑफ द Hmm. मैच कैन बी ऑन बोथ साइड बेसिकली। अभी True, true. इसके बाद आप देखो तो केकेआर 6th पोजीशन पे पहुंच गए हैं। उनके नेक्स्ट 3 मैचेस सीएसके, एसआरएच और आरसीबी है। तो टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी बहुत अच्छा चांस है उनका। दोनों तीनों मैच में अगर अगर खेलते हैं, आज 11 पॉइंट पे है, छह तीनों तीन मैच जीतते हैं तो 17 पे आ सकते हैं।
तो इट कुड बी अ गुड मैच ओवरऑल बेसिकली, आगे चल के अच्छा हो सकता है, लेकिन इट वाज एन एक्सीलेंट मैच यस्टरडे, आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट बेसिकली। निखिल। Nikhil sir. Yeah, I think, see, two, three things when you critically analyze what happened yesterday. And I would point out to the 20th over that Rajasthan bowled. And when you give the ball to Madhwal to bowl the 20th over and knowing that Russell is in full form, I think it was a bit of a captaincy. Maybe on the spot you can't think of everything. लेकिन उस वक्त अगर आपने जो आपका सबसे अच्छा बॉलर उस वक्त युद्धवीर जो था, जिसके एक ओवर बाकी था और जिसने विकेट भी लिया था, और ये महाशय ने 2 ओवर बॉल करके 28 रन दिए थे। तो आपको भी पता था कि ही वाज नॉट वेरी इफेक्टिव, सो ऑन द डेथ आई थिंक, एंड रियान परग हिमसेल्फ हैड 1 ओवर टू bowl, and करेक्ट। he had bowled well. If you see his statistics, 3 overs, I think 21 यस runs or यस, something. 21 रन। या या सो उसको उस वक्त है ना, जब आपके सामने जो बैट्समैन है जो फुल फायर पे है एकदम, you know that he's going to find the सिलेंडर है boundary एकदम। irrespective. Yeah, that you need somebody more mature, more cool, करेक्ट। calm, who यस knows यस every यस। ball, at every ball he will stop and think मैं क्या करूं, भले ये छक्का गया, 5 बॉल बाकी है, मैं क्या करूं. So I think that error that you gave the ball to Madhuwal and he went for 22 runs. So now करेक्ट। compare that to Rajasthan, where Rajasthan was playing last over 22 runs required. Same. अगर आप करेक्ट। देखो यस तो दोनों का स्कोर ऑन द एंड ऑफ 19 ओवर्स मोर और लेस सेम था. यस। सेम। या इन्होंने बनाया 22, ये नहीं बना पाए 22, और जो भी कारण बराबर। था, बिकॉज शुभम दुबे एक्चुअली हिट अ 646 at यस 17.2, 17.3, 17.4. So that was यस fantastic because you thought कि गया मैच गया, क्योंकि पहले 2 बॉल यस में कुछ यस। हुआ नहीं, और फिर वो 646 गया, और फिर लास्ट बॉल में 2 रन लेने थे उनको, या 3, करेक्ट करेक्ट। दो दो इक्वल करने के लिए, हाँ। और टू गो टू सुपर ओवर. सो आई थिंक that 20th over of Rajasthan costing 22 runs. It had happened earlier also when Sandeep Sharma gave that to, I think, अब्दुल वो जो जो फास्ट बैटर है, उसको भी 22 रन दिए थे. देन राजस्थान लॉस्ट दैट मैच बाय टू रन्स इन दैट मैच. दे गिव 22 रन इन द लास्ट ओवर. तो अब्दुल दैट समाद 20th होगा। ओवर अब्दुल समद ने 22 रन बनाए थे संदीप शर्मा करेक्ट की करेक्ट बॉलिंग में. तो करेक्ट। तभी भी वो मैच राजस्थान 2 रन से हार गई थी. इस बार 22 रन दिए, 1 रन से हार गई. अब रियान पराग का तो आप कुछ बात ही नहीं कर सकते. बहुत ही शानदार, माशाल्लाह, क्या बैटिंग. आई मीन, यस that यस is the real Rian. If you want to यस understand the quality of Rian Parag, you have to see his innings yesterday. यस। Brilliant. And I think he करेक्ट। showed his mettle. And I'm a fan of that guy. I've been watching him for the last 3 years. I've seen him evolving from a very cocky, arrogant, young guy to a more mature, evolved cricketer, यस now a captain. Not only has his changed his personality with the beard, he looks more, a more mature person. In the first season, he was a little cocky. You could see that with all his antics in the first season. Now he's more mature, and the way he played was brilliant. I think Moeen Ali, poor fellow, 2 overs, 11 runs, 2 wickets, यस। and then 3 overs, 43 runs and 2 wickets. So अच्छा। 32 रन. बेचारे को एक मैस बेचारे 5 sixes in मैसकर्ड 1 over. मैसकर्ड। Massacre किया है ना. So like Rian was saying, Rinku, if you can do it, I can do it too. So so यस so यस। don't so don't think that you're the only guy who can hit 5 sixes. No, I can do it also. And I think that was a great statement to make, but for Rian as a करेक्ट India prospect and as a player who करेक्ट। is, who was tremendous caliber, and unfortunately loaded with the burden of captaincy because of Sanju not being there, and that the captaincy load actually takes away a lot in terms of your ability to perform sometimes. So I think बहुत ही बढ़िया था रेन परा का प्ले. लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, हार जीत हम कितना भी कहें इंपॉर्टेंट नहीं है क्रिकेट के लिए. जीत और हार अपने अपनी जगह में अपना एक महत्व रखती है. तो आप अगर 1 रन से हारे हो तो हारे हो आप. फिर आप 1 रन से हारो कि करेक्ट 10 करेक्ट रन करेक्ट। से हारो या 100 रन से हारो ना. Yeah. It's like saying या कि या it's like saying I have 99% water that is pure. Will you drink it? No. You want या या। 100% pure water, right? 1% impurity in your water, you're not going to drink that water. So that करेक्ट one करेक्ट। percent that you fail in reaching your target is what hurt Rajasthan yesterday. Great match. I agree with you. It was good for cricket, not good for blood pressure patients like me. So I wasn't watching. I was watching. I was just seeing the score on an app. टीवी से मैं निकल गया था बाहर. मतलब नींद नहीं देखना है मुझे.
एक पॉइंट है but इसके अंदर, एक जी, पॉइंट है कि अगर जायसवाल जिस तरह से स्टेडी से खेल रहा था, वो अगर एक 6 या 9 बॉल और खेल जाता, तो उसके जो बहुत फर्क पड़ा। 34 के अगर 50 तक पहुंच जाते ना, देन द यस, चांस द बॉल वाज इन आरआर's बैग एक्चुअली, सम ऑफ या द अदर। आई एम नॉट सेइंग कि वैभव शुड हैव प्लेड, पर या जायसवाल वाज इन फुल फॉर्म। वो 34 या पे आउट हुआ, अगर एंड ही आउट गॉट आउट टू अ वेरी गुड बॉल दिस टाइम, द शॉट वाज नॉट रैश एक्चुअली, टू अ गुड बॉल। तो अगर वो खेल जाता तो गेम चेंज हो सकता था। दैट्स द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू मेक। And just a word on Vaibhav, young guy. We know he's 14 years old, and we shouldn't expect too much of him. But at least one thing we should be able to expect of him is to, be selective when when you're hitting shots. You don't have to come onto the pitch and swing at every ball. You have to understand that if you have got your eye in, if you have seen your coordination, if you know how the pitch is behaving, if you know how the bounce is coming, it's then that you really start hitting as much as you just settle down. So I think if you come and say मैं पहले ही बॉल में मैंने चौका मारा दूसरे बॉल में आउट हो गया, ये जो शायद गली क्रिकेट मैदान क्रिकेट में चलता होगा, आईपीएल लेवल पे ये नहीं चलता है। आपने एक बार 100 रन मारे 38 रन 38 बॉल में, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एवरी डे इज नॉट संडे, राइट? सो यू हैव टू टेम्पर डाउन your play the way you play. You have to be a little more mature and evolved in deciding which ball to hit, and which bowler to hit and when to hit. So I think Vaibhav needs that counseling. I'm sure Rahul Dravid must be doing that, and he's a great coach. He's one of the best minds in Indian cricket today, and very cool and calm. And I'm sure he'll bring that into Vaibhav. But Vaibhav must understand two failures already, 0 and 4, two more, and then you know what's going to happen. So you need to play your proper game. You need to show your skills and not stutter like this another time, because then the cricket cycle is not that kind and generous. तो अभी जैसे उसको 4 मैच खेल चुका है वो अभी तक, और 3 मैच अभी और खेलेगा। सो देखा Mm, जाए तो 14 मैच में से 50% मैचेस वो खेलेगा। सो mm. द बेस्ट जजमेंट वुड बी आफ्टर द 14th मैच, हाउ I डज ही agree. प्ले इन द नेक्स्ट 3 I agree. कैन वर्क। I agree. It's too short, but he's reaching that point where if a third failure happens, then people will start asking questions. Today, nobody's questioning him. So he'll have to sort of, I'm not saying 100, but a 30 runs of 10 balls, a 25 runs of 6 balls is also good in an IPL. You don't have to have the century in mind. So I think he has to understand that he has to play at least 8, 10 deliveries and come good the way he did in the first match. He made 30 of 16, 17, something like that. डू So यू I think थिंक that is इन द नेक्स्ट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट मैच दे विल चेंज हिज बैटिंग पोजीशन, मे बी no, गो no, डाउन no, और no, समथिंग? no, 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 no. I don't think so, and I don't think they should, because he is playing fast bowling well. He plays. See, if you see him, if you see his 100 out 38, he has used the pace of the 35, bowler brilliantly. Of 35, करेक्ट। he has used the pace of the bowler very well. So on the leg side, whenever the bowler heard, he would have his shot and he would let the ball go with the speed. Offside, he would use the cover side. So that the ability to time that is very very critical for his scoring, and that cannot happen in the middle overs. He has to go in the beginning when the ball is new, when the ball is coming onto the bat, when the fast bowler is in play, and not when the spinner is in play. So I think he has to be there, right there, up there. He may go to number 3, I don't know, but at least not below that. Either he should just open and continue opening, or come in at number 3 if you want him to just watch the pitch and watch the conditions for a little bit of time. Out of the 4 matches, I think 3 years played at Jaipur, and this was the first one in Calcutta, which was outside Jaipur according to me. से याद आ रहा है मेरे को, आई नीड टू चेक द रिकॉर्ड। तो वो Yeah, I भी एक think you're फर्क right. पड़ेगा। हाँ, हाँ, हाँ। So that's what he has to be told, that you're Yes, in a new ground, new environment, new ecosystem. yes, Wait, understand, correct, correct, evolve, correct. mature. Don't just go and you know I mean, and the catch was good catch. It wasn't that it was an easy catch that he gave, but Yes, you yes, must know that the fielder opposite you, the team opposite you, is not a Maidan yeah, is not yeah, a Maidan team. It's yeah, an yeah. IPL team. You're going to have Diggaz fielders like that who will convert half chances into chances. So you need to be that much more careful. So I think, yeah, good lesson for him. Maybe he'll start thinking and analyzing what he's done and change his stance and change his approach. But overall, this IPL catching has been very poor actually throughout the Yes. tournament, if you see.
They must be finding it tough to see which are the best catches. They I think could do a three program things, which are but the I have best drops. two points of defense, I'll say. One is I've seen a lot of catches being dropped, and then the player saying something about the light coming I into his eyes. light, yeah. So sometimes you can't help that. And the second is that when you have the day match, when the sun is up and it is setting behind the stadium, and maybe the ball is coming from that direction, it's also difficult to judge the ball that time. And the heat is there. You can't run as fast as you could maybe in the evening, and because you're already tired, and so you misjudge the distance, and then last minute you have to dive, and then you spill the catch. So but I agree, these are excuses, and at the end of the day, if you're a champion team, you must take this into account and then show your performance. But yes, a lot of improvement No, no, required, both on the yeah, no. catching and on the ground fielding. I assume that the light and everything they must be practicing under such Yes. conditions also. ऐसा Yeah, तो है नहीं absolutely. कि आज चले गए और दिन Absolutely. में खेल रहे हैं और रात को चले गए, ऐसा तो नहीं है ना, Absolutely. Absolutely. है ना? Absolutely. I agree. Yeah. Yeah. True. True. It's a good match, I Really. think, a good positive, but for Kolkata, something to worry about. The bowling did not come through well. Winning by हाँ, 1 run makes them more stronger, I guess, more motivated to go and perform better. But they need to look at the bowling. I think there is an issue there. And whilst Varun and Narayan did not do badly, at the same time they were not able to take the wicket that they should have taken, and not allowed Riyan Parak to just ride roughshod over them. ऊपर So है. I think something to think back, for them to look back and worry about and think that क्यों ऐसा हुआ कि हमने राजस्थान जैसी टीम को और रियान परा को खास करके we let him run and do what he wanted to do. So lot of internal analysis for KKR to do if they want to really qualify. Yeah, so this was match number 53 that we reviewed, which was between KKR and RR. Thank you both of you for joining us today. See you in the next episode. Thank you. Thank you.